नमस्ते। मैं हूँ ईप्सा। हम लोग कुछ टाइम से कर रहे हैं सोप्स। केमिस्ट्री का टॉपिक है सोप्स डिटर्जेंट। और चैप्टर जो है ये दैट इज बेसिकली फ्रॉम कार्बन कंपाउंड्स। उसमें एक छोटा सा पार्ट है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो उसको फाइनलाइज कर रहे हैं, उसको लास्ट पार्ट को कवर कर रहे हैं। तो इसमें 3-4 टॉपिक्स कर रहे हैं, वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत सारे लिखे हैं डिटर्जेंट, हार्ड, सॉफ्ट, वाटर। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अब देखो, वाटर वाटर इज ऑफ 2 टाइप्स। आई मीन, वाटर एक ही टाइप का होता है, H2O ही होता है। बट अगर उसके अंदर हम मिक्स कर दो कुछ कुछ चीज, तो कुछ कुछ और भी तो बन जाता है ना। सपोज यू ऐड नींबू और चीनी, तो वो नींबू पानी बन जाता है। सपोज यू ऐड जूस टू इट, तो वो डाइल्यूटेड जूस बन जाता है। सो इन केमिस्ट्री देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाटर, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। नाउ यू नो दैट वाटर कहाँ से मिलता है हमको? रिवर्स में से, पॉन्ड्स में से, सीज, ओशंस, वेल्स। दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। यहाँ से हमें पानी मिलता है। ये जितनी भी चीजें हैं, स्प्रिंग्स, रिवर्स, इन सब चीजों का सोर्स क्या है, मतलब वो कहाँ से आ रही है? कोई चीज माउंटेन पे से फ्लो करके आ रही है, जैसे रिवर या स्प्रिंग। अगर वेल है तो वो अर्थ के क्रस्ट के अंदर से निकल के आ रहा है, अगेन रॉक्स पे से जाके आ रहा है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ऑल ऑफ देम आर फ्लोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ रॉक्स। कहीं पे कोई रॉक हो सकती है, कहीं पे सोडियम रॉक हो सकती है, कहीं पे कैल्शियम रॉक हो सकती है। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन वाटर इज फ्लोइंग और इज विद इन दोज रॉक्स, वो रॉक्स के अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं ना, मैग्नीशियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट, वो पानी में थोड़ा थोड़ा डिजॉल्व हो जाते हैं। You know, things dissolve in water. You know that salt, the typical NaCl salt, dissolves in water. Similarly, there are other salts also which can dissolve in water. Now, depending on the source of water और उसके आसपास कौन सी रॉक थी, वो वाला सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। फाइन। नाउ दिस इज द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन between soft water and hard water. Okay, now what is soft water? Is typically it has 90% NaCl dissolved in it, sodium chloride, the simple table salt dissolved in it. और भी होते हैं थोड़े थोड़े थोड़े, बट मेजरली सोडियम क्लोराइड उसमें डिजॉल्व होता है। इट्स अ वेरी जेंटल वाटर, साफ पानी, पीने में भी अच्छा, गुड वाटर। इट्स सपोज टू बी गुड वाटर। It's not distilled, it's not the purest form of water because it may be salt hai, but it is good water. Now comes hard water. हार्ड वाटर में थोड़ी परेशानी है। उसमें क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा इस टाइप की रॉक्स के थ्रू फ्लो कर रहा हो ना, जिसमें मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, इस टाइप्स की रॉक्स से निकल रहा हो वो, इफ इट इज पासिंग थ्रू दोज रॉक्स, then what happens, these magnesium salts and calcium salts, they get dissolved in that water. अभी कौन से सॉल्ट्स होते हैं टिपिकली जो हमें याद रखने होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम सॉल्ट्स तो ठीक है, बट क्लोराइड्स, sorry, bicarbonates, here also bicarbonate, sulfates. I'm sorry for this, I'll just rub this and I'll write it in a while till it dries. तो बेसिकली इसमें क्लोराइड्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है। लाइक कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एंड इफ इट हैज नॉट ड्राइड, लेट मी राइट हियर, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम
bicarbonate. Uh, okay. So these are the salts which are dissolved in this water. And when some salts are present, that's called hard water. वो थोड़ा सा अजीब होता है. It's not very useful to us. It is of not so much use. It hampers a lot of activities that we do in daily life with water. इसलिए इसको hard water या not good water. Okay. But we get it in nature, so we have to accept it. Water समझ आ गया? Both of them are H2O, but different types of salts dissolved in them. Now come soaps and detergents. Soaps, we've already read 3 episodes in detail about soaps. फिर भी थोड़ा सा मैंने लिख दिया है कि ऐसे ऐसे zigzag होता है और एक balloon जैसा होता है. The zigzag is called the tail, and it is made up of lots of carbon. It's a carbon chain, hydrocarbon chain. Okay, the head may vary, but typically it's a sodium ion का कोई फॉर्म होता है. जो हेड होता है, that's a typical sodium ion का कोई फॉर्म होता है. And soaps are typically very gentle. मतलब you can apply them on your face, you can wash your hands with it, you can do whatever you want to do with. They will not harm your skin or clothes or utensils. They're gentle things because of especially this sodium ion. Now, this is a new thing that we haven't studied, but it's very similar to soaps, so we can understand it very well. This also has a zigzag tail and a balloon kind of a head. This zigzag tail is exactly like soap. इसमें बहुत सारे कार्बन एटम्स होते हैं, 15, 20, 30, 40. It's a long carbon chain like soaps, hydrocarbon, covalent. बट इसका हेड इज डिफरेंट फ्रॉम सोप. इसके हेड में टिपिकली सोडियम आयन होता था. इसके हेड डिफरेंट डिटर्जेंट्स विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड्स, लाइक डिफरेंट ब्रांड्स. अगर आप डिटर्जेंट का एक ब्रांड लो या दूसरा ब्रांड लो, उसमें मे बी द टाइप ऑफ हेड्स आर डिफरेंट. द कंपाउंड्स दैट मेक अप द हेड, ये जो यहाँ पे कंपाउंड प्रेजेंट है, वो शायद अलग अलग होंगे. ये हेड पे क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं. हम 2-3 देख लेते हैं. वन इज अमोनियम आयन. दिस कैन बी मेड अप ऑफ सम सॉर्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट. इट कैन बी मेड अप ऑफ सम फॉर्म ऑफ sulfonate salt, SO3Na, NH4 plus, and there are many other types which can make up the head. Now, if the head is not sodium and it is something like this, then that molecule is not called soap. फिर उसको डिटर्जेंट बोलने लगते हैं. सोप उसी को बोलते हैं जहाँ सोडियम हो. पोटेशियम आयन इज ऑल्सो अलाउड इन सोप्स. पोटेशियम आयन वाला चीज इज ऑल्सो वेरी जेंटल. बट जो डिटर्जेंट होता है, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ हेड, इट्स वेरी हार्श. अगर आप हाथ पे डिटर्जेंट, यू अंडरस्टैंड, सबके घर में डिटर्जेंट वर्ड यूज होता है जो कपड़े धोने के या और क्लीनिंग के लिए यूज होता है. इफ यू यूज डिटर्जेंट्स वेरी ऑफन, तो आपने देखा होगा हाथ रफ हो जाते हैं, कपड़े रफ हो जाते हैं. इट्स अ हार्श chemical. It's a harsh chemical. It's not a gentle chemical for our skin, basically. All right. If you understood this, what is soft water, hard water, soap we knew only, and what is detergent. Yeah. Now, the purpose of this topic, this was just introduction. The purpose of this episode is how and when soaps are used and when are detergents used. 2 टाइप के हमने बनाए क्यों है? जेंटल है तो जेंटल ही रहने देते ना, इतना हार्श वाला बनाया क्यों है? So the purpose of this episode is to understand that. ठीक है. अब different areas, suppose even in one city,
अलग अलग जगह से पानी आ रहा है, कहीं से वेल से आ रहा है, कहीं से रिवर से आ रहा है, तो वाटर सोर्सेज आर मल्टीपल इन डिफरेंट सिटीज, और इवन इन द सेम सिटी पानी का सोर्स अलग अलग होता है। तो एक ही सिटी में कहीं पे सॉफ्ट वाटर आ रहा हो सकता है नल में, कहीं पे हार्ड वाटर आ रहा हो सकता है। ओके, सो दैट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर लिविंग। नाउ सपोज वी हैव टू टेक बाथ, तो ऑब्वियस है व्हाट विल यू यूज? सॉफ्ट वाटर। अगर आपके यहाँ हार्ड वाटर आ रहा है तो यू विल फाइंड सम प्लेस वे यू फाइंड सॉफ्ट वाटर, और वहां से पानी लेकर आओगे और नहाओगे या मुंह धोगे। ठीक है, यू कैन नॉट टेक बाथ विद हार्ड वाटर, इट इज वेरी वेरी हार्श। सो सपोज यू हैव टू टेक बाथ, यू हैव टू यूज सॉफ्ट वाटर। बट पानी की तो और भी यूजेस हैं। क्या यूजेस हैं? यू हैव टू वॉश क्लोथ्स, you have to wash utensils, you have to do other kinds of cleaning. There are multiple uses of water. अब सपोज हमें हमारा मेन कोई भी पर्पस हो गया वॉशिंग क्लोथ्स और यूटेंसिल्स और एनीथिंग, क्लीनिंग इज द मेन पर्पस। अब हम डिफरेंट केसेस देखते हैं कि क्या हो रहा है। सपोज आई हैव रिटन डर्ट, सॉफ्ट वाटर एंड सोप। दिस मीन्स व्हाट कि हमारे पास वी हैव अ डर्टी क्लॉथ, जैसे हमने पिछले एपिसोड्स में किया था, वी हैव अ डर्टी क्लॉथ जिसपे ऑयल है या डर्ट है। हमारे घर पे सॉफ्ट पानी आता है, थैंक गॉड फॉर इट, एंड हम उसको सोप से धो रहे हैं, नहाने वाले शायद सोप से उसको धोने की कोशिश कर रहे हैं। सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। दिस विल with soft water there will be no problem at all. It will, what will happen, it's a gentle thing, gentle medium, both of the mediums, the water also and the soap also, both of them are gentle. This is also gentle, this is also gentle. The typical missile structure will be formed. Remember missile structure? वो जो ऑयल से चिपक के एंड सोप के मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे हो जाते थे एंड फिर डर्ट को उखाड़ देते थे फ्रॉम द क्लॉथ। सो अ टिपिकल मिसल स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म्ड एंड क्लीनिंग will happen. We will be able to clean the cloth. This structure will be formed and cleaning will occur. Whether you are washing utensils or clothes or anything, cleaning will happen. Okay? The best situation when you have soft water and soap. Okay. Now, suppose कोई गंदा कपड़ा है, हमारे घर में अच्छा वाला पानी आ रहा है, सॉफ्ट वाला पानी आ रहा है, और हमने डिटर्जेंट यूज किया। डिटर्जेंट, सपोज आई नेम ब्रांड्स इज लाइक एरियल और टाइड और सर्फ, दीज आर डिटर्जेंट्स। ओके, अब वी वांट टू वॉश दैट क्लॉथ विथ अ डिटर्जेंट, नॉट अ सोप। One reason being soaps are expensive. Soaps are expensive. So we don't want to spend so much, तो हम डिटर्जेंट यूज कर लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। There is nothing wrong with this combination also. सेम चीज होएगी इसमें, मगर एक चीज होगा, वाटर तो जेंटल है, मगर जो डिटर्जेंट है वो हार्श है। बट हार्श होने से क्या है, हमारे सिर्फ स्किन पे इफेक्ट आएगा या क्लॉथ पे भी थोड़ा बहुत आ सकता है, नथिंग मेजर। सो डिटर्जेंट होने की वजह से देयर इज सम इशू विद द स्किन, बट मिसल विल बी फॉर्म्ड, और अगर मिसल स्ट्रक्चर बन रहा है तो क्या होगा, क्लीनिंग विल अकर। तो अगर आपके घर में सॉफ्ट वाटर आ रहा है
and you still want to use a detergent, there is no issue except for slight damage to skin or clothes. Fine. Now, now comes the third situation. आपके घर में soft पानी आ ही नहीं. You are living in an area which has hard water, lot of magnesium salts, lot of calcium salts, and they have spoiled the water. The water has become harsh. The water itself has become harsh. It's not even good for washing your hair. That even simple water is not good for washing your hair or skin. मतलब forget कि detergent हो कि soap हो, even water is so bad. But that's what you're getting in your house. फिर क्या करें? चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं. हमारे पास एक गंदा कपड़ा है, हमारे घर पे हार्ड वाटर, डिफिकल्ट वाटर आ रहा है, और हमने सोचा कि वो कपड़े को सोप से धो दे. Now what is happening is, soap is gentle, but water is harsh. So what will happen to skin? There will be damage. There will be some damage to skin. Plus, एक बहुत important बात, because of which we are studying this entire episode. This is the main, this one and the lower one are the main reasons why we are studying all this. Whenever whenever hard water reacts with soap, let's understand through a diagram. Hard water means some calcium salt or some magnesium salt, and there is a soap around it. पानी में आपने soap dissolve कर दिया, so it's basically the soap. Now what happens is, these two, this from water, and this is the soap. तो आप पानी में सोप डिजोल्व तो करोगे ना कपड़े धोने के लिए. सो कपड़े धुलने से पहले ही these two things, they react with each other and they form a slimy, dirty, kali si substance which is called scum. This is a very important word that they ask for. It forms scum. मतलब वो चिकना चिकना सा, काला काला सा, गंदा सा, बल्कि और कपड़े को गंदा कर देता है. Instead of removing the dirt from the cloth, it makes the cloth even more dirty. उस पे चिपक जाता है, गंदा सा हो जाता है. So when these calcium salts from hard water react with a typical simple soap, this scum is formed. Okay, now when scum formed, the cleaning is not good. थोड़ा बहुत साफ होता है, इट्स नॉट कि सफाई नहीं होती, बट कुछ कुछ गंदा भी हो जाता है. सो द क्लीनिंग इज नॉट गुड. कुछ स्टेन निकल जाएंगे, कुछ नए स्टेन आ जाएंगे, एंड योर क्लॉथ विल लुक डर्टी. Okay, so that is the main issue. If you are getting hard water at your home and you try to use a soap to clean it. Soap means the bar soaps that we use for bathing. ठीक है, अब आ जाता है कि अब इसका सोल्यूशन क्या है. हार्ड वाटर ही आ रहा है, सॉफ्ट वाटर कहाँ से लाओगे? हर चीज़ के लिए, बर्तन धोने के लिए भी, कपड़े धोने के लिए भी, सब हर चीज़ के लिए सॉफ्ट वाटर कहाँ से लाओगे? एक बाल्टी सॉफ्ट वाटर तो ले आओगे नहाने के लिए, but for everything you can't get soft water every day. तो अब क्या करते हैं? The solution is this. If you are getting hard water at home from the supplier, from the municipal supply or whatever, the well, the tube well, if you are getting hard water, the solution is, for washing or cleaning, use a detergent.
Now what is this? ये भी harsh है, ये भी harsh है, और मैं कह रही हूँ दोनों को यूज कर लो. It's like saying negative and negative become positive. So this is harsh, this is harsh, but इस केस में this has what? Calcium, magnesium salts, and this has what? That ammonium head or sulfonate head or whatever. इसमें the reaction does not happen. They do not, the water and the detergent, they don't react. Both of them are very stubborn. They don't react. No, everybody is boss of each other. ये कहता है मैं नहीं react करूँगा, वो कहता है मैं नहीं react करूँगा, सब अकेले अकेले पड़े रहते हैं. Now, since this is free, this has not been damaged. Actually, हमें कहना चाहिए, the detergent has not been damaged. That is why it is able to form micelle structure, and that is why the cleaning can occur. ये क्रॉस किस चीज के लिए था? The reaction does not happen. So though we have hard water, but to counteract it, we are using detergents. They don't allow any reaction. No scum is formed. कुछ भी गंदा गंदा फॉर्म नहीं होता है. अच्छे से मिसल्स फॉर्म होते हैं और क्लीनिंग हो जाती है. इसमें क्या इशू आता है कि ये दोनों रिएक्ट कर जाते हैं, पानी और सोप. पानी, द सोप इज वेरी बेचारा सा, पुअर थिंग, सोडियम जेंटल सा, वो इससे डर जाता है कैल्शियम वगैरह से. Gets scared. There's a reaction happening. These things overpower the soap and form the scum. And the moment the scum is formed, cleaning will not happen nicely. Okay? So this is what the topic hard water, detergent, soft water, what to use, not to use was about in this chapter. Hope now first you'll get your water tested, then you will decide which soap or which detergent to use for what purpose. Okay? Thank you.